Okay, so good morning, everyone. And I hope that you all must be enjoying this beautiful and interesting journey of 10 days celebration. In fact, now I believe it's a carnival. And we all are very fortunate that we are accompanied by some extraordinary females. Of course, they are extraordinary because they are trying to bring changes. In fact, they are bringing changes to their lives, to people around them, and to the society. And following the same journey today, we have with us Minakshi Mahajan, ma'am. Welcome, ma'am. Hi everyone. So, a businesswoman for 35 years, and she belongs to a world famous business family we all are aware of. The family that's famous for the spices worldwide, MDH. And she's also part of the same business. And in fact, her son has joined her in the same. She has a daughter who's an orthodontist, and her recent venture is KITSOL, that is catering Indian families. Ma'am believes that you must do right things, good things, where everyone gets benefited. And she takes her life experiences as her teachers. Such a beautiful thought. She also believes that curiosity leads to experiences. And with her experiences, sharing her experiences, today she'll be guiding us all to focus to succeed. So we are all ready to hear to you, ma'am. Please. Hi, hi Sonal. Thank you for inviting me and giving me the opportunity to be here with everybody and share my own experiences. I think we all have our own experiences, personal experiences leads us where we are today, all of us. And what my personal opinion is, we all have our goals and we want to achieve them. It can be something personal or it can be just anything. Somebody is looking after money, some friendship, some relation, anything. And I'm not at all a motivational speaker, and I'm not a very good orator also. But I can just talking to you as a person, one to one. And what I personally feel that focus is very important in our life. And we all have focuses. Whenever you are at home, you're focusing on your family, your kids, your husband, your wife. I mean, सारे relations होते हैं. But everybody wants to be successful. And it's not at all a very difficult thing to achieve. Everybody is successful in one form or another form. We all are achievers. We all are successful people. It's just that we are not satisfied. And that's the only thing makes a little difference. Like मेरे लिए कुछ भी हो सकता है, आज का गोल हो सकता है, कल का गोल हो सकता है, बहुत बड़ा एक एम हो सकता है. All these everything is achievable. But the only problem comes when we think about the solution or success. For me, my focus was never on a very high-end things. I was very, you told everyone, मेरी background में कहीं पे भी कुछ ऐसा नहीं था जो मेरे पास नहीं था कभी भी. It never happened in my life. तो वो वैक्यूम नहीं था, कुछ अचीवमेंट का वो कोई गोल नहीं था, कुछ भी नहीं था. लेकिन अगर मैं ये सोचूं कि सक्सेसफुल होना, जैसे कि मुझे आपने बताया सोनल ने कि मैं काफी सारा कुछ काम कर चुकी हूँ. Yes, with age, I've done a lot of things. But for me, I'll start with success. For everybody, success means some kind of achievement or victory and such kind of words. We all know. There are a lot of synonyms. You Google it and you get a lot of list. लेकिन वो जो सक्सेस के साथ में इतने सारे वर्ड्स सिनोनिम्स हैं, वो हर जगह फिट नहीं होते. उसका भी एक मीनिंग दूसरी जगह पे जाके थोड़ा चेंज हो जाता है. एंड सेम इज विद द फोकस.
If you ask anybody, what's your focus? They can say that my focus is on my money, on my job, on my business, or my family. कुछ भी हो सकता है. और वो जो हमारा टारगेट होता है ना, that is focus for me. I may be wrong, you may disagree, but I think focus का मतलब हमें होता है one direction. एक जो पॉइंट है इसको मुझे अचीव करना है, वो लाइफ लॉन्ग फोकस भी हो सकता है, डे टू डे भी हो सकता है, आवरली भी हो सकता है, वीकली भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है, wherever you can fit yourself in. लेकिन ये जो फोकस है, ये हम डिवेट हो जाते हैं इस फोकस से, और जब डिवेट हो जाते हैं वी गेट डिसअपॉइंट, और वो जो डिसअपॉइंटमेंट आ जाता है तो फिर हम अपने आप को सक्सेसफुल नहीं मानते. हो सकता है कि आज का मेरा गोल ये हो कि मुझे 1 लाख रुपए इकट्ठा करना है, अर्न करना है, वो नहीं हो पाया, किसी भी वजह से नहीं हो सकता, नहीं हो पाया, तो दैट डजंट मीन दैट आई एम अनसक्सेसफुल. वो भी अचीवमेंट है. इफ आई अर्नड 50,000, that's all in your mind. And I can say that after having a turmoil life, I struggled, if not money-wise, emotionally. And when we deviate from our focus, we don't feel comfortable. And that stress comes. That stress can be of two kinds, physical as well as mental. Physical, we can deal with some medicines, with exercises. We can eat some good food and we can nourish ourselves. But the mental stress, that is the most important thing in our life. That changes the whole scenario. Mental health and physical health, they go parallel. But if you are thinking that my mind is okay, and generally okay ही होता है, कुछ नहीं होता. ये जो बड़े बड़े वर्ड्स हैं, डिप्रेशन है, what do you call, Anxiety. right thinking, yeah. तो वो हमारे जैसे लोग होते हैं ना जो डेली सब काम पे जा रहे हैं, अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम इतना सारा सोचें. एंड व्हाई टू रेस्ट्रिक्ट योरसेल्फ. एक छोटी सी बुक का टाइटल है व्हाई टू बी एन एंजल व्हेन यू कैन बी अ ह्यूमन बीइंग. तो वो जो हमारी स्ट्रगल वहीं से शुरू हो जाती है. वी वांट टू पोज समथिंग, वी वांट टू बी समथिंग. वो हमारे लिए एक स्ट्रेस देता है, मेंटल स्ट्रेस हो जाता है उसके लिए. मुझे आज एक मीटिंग के लिए जाना है, मुझे एक इंटरव्यू के लिए जाना, आई हैव टू पोज इट. लाइक मुझे आज यहाँ बुलाया गया तो मैं आई थी, तो I felt a little odd in the sense I felt क्या है ये. पर ऐसा कुछ नहीं है था मेरे मन में, और मुझे लगा कि okay, if you guys are thinking that I'm capable of not motivating, but I can share my thoughts with you. So I did. In my life, the most stressful time was when I lost my mother and my brother, and that too in span of just 40 days. At that time, and my age was, shall I tell you my age right now? Well, at that time, I was 30 or 31. And losing my best friends in my life in the span of 40 days was, I don't know what word should I use. जैसे होता है ना कि even I was dead. In a way, I was into kind of depression. मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था where life is leading and where they've gone, and I knew that I'm not going to see them again. In that situation, my son was just a year old. And one of my elderly aunt told me that your mother has gone, but your kid's mother is still alive.
So you have to look after them. And then the immediate focus, छोटा बेबी होता है, अब उसके साथ बहुत बहुत सारी ख्वाहिशें भी हो रही होती हैं और उसके फ्यूचर को लेके इतना कुछ हो रहा होता है और वो एक ब्लंडर आ जाए, लाइफ हमारी हमेशा स्टेबल तो रहती नहीं है। तो जब उन्होंने ये वर्ड्स बोले तो मेरा फोकस एकदम उस चीज से, अपनी मदर से हट के मेरे बच्चों की मदर पे चला गया। Then I started grooming myself. I just fought the thoughts. And a very good thing happened in that. I believe in your worst of the worst time, you meet best of the people in your life. And that's what happened. And it happened every time. And the second ditch came in my life when I lost my husband. At that time, my mother wasn't there. No elderly person, but my father was there definitely. And that was a great support for me. And one day he told me, have you looked at your face? And I was like, kya ho gaya mere face ko? I actually came to my home and I actually saw my face in my mirror. It was all जैसे होता था, मुझे लगता था मैं 100 साल की बुढ़ी होगी। फिर मुझे लगा कि oh, I have to work on that. This is what he meant. Right. Then I started looking out for myself. I got my hair done. Then I concentrated on my dress up. And, every time, what I'm trying to say that every time our focus deviates. But we don't understand at times that we need to focus on right things. And what are those right things? Those right things are, कुछ भी हो सकता है आपके लिए, मेरे लिए कुछ भी अच्छा हो सकता है, आपके लिए कुछ और अच्छा हो सकता है। मेरे लिए एक टॉम एंड जेरी देखना आज की एज में भी, तो मेरे लिए इट्स फन, मुझे खुशी मिलती है उसको। लेकिन होता यह है कि हम बहुत बड़े उसको टारगेट को लेके जब चल पड़ते हैं तो वहां पे डिविएशन की पॉसिबिलिटी थोड़ी ज्यादा हो जाती है। लेकिन हम जब ये सब बातों से हट जाते हैं और हम डे टू डे लाइफ के ऊपर जब फोकस करने लग जाते हैं तो वो बड़ा वाला गोल अचीव करना थोड़ा इजी हो जाता है। लाइक इफ यू आर कुकिंग फॉर 1 person और 10% और 100%, तो आप एकदम 100% के लिए खाना बनाना बड़ा टफ हो जाएगा फॉर अ शेफ और कुक, बट वन हैज टू स्टार्ट फ्रॉम 1 person, फैमिली एंड दैट काइंड ऑफ थिंग। वैसे जब मैंने बिजनेस भी शुरू किया था तो उस टाइम मेरे दिमाग में कभी ये नहीं था कि मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है। मनी वॉज नेवर माई प्रायोरिटी, पर मुझे शौक था, दैट वॉज माई हॉबी। एंड आई नोटिस जो आपकी हॉबी होती है वही अगर आपका काम हो जाता है तो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है, बिकॉज आई एम अ वेरी टॉकेटिव पर्सन। मुझे डिफरेंट लोगों से मिलना अच्छा लगता था, उनसे बातें करना अच्छा लगता था, पर उस टाइम पे भी इतना नहीं था। जब मेरे बच्चे बड़े हुए, जब आई स्टार्टेड लुकिंग एट देम, देन आई स्टार्टेड वाचिंग दैट मेरी लाइफ और मेरे बच्चों की लाइफ बड़ी डिफरेंट है। लाइक मेरे पेरेंट्स की लाइफ मेरे से बहुत डिफरेंट है, क्योंकि हमारे पास जो चीजें आज हैं और जो आजकल के बच्चों के पास हैं, आप खुद ही मैनेज देख सकते हो। यू कैन सी व्हाट यू हैड इन primary stage of your life and what kids are having right now. So their struggles are very different. Our struggle was very different. Our parents' struggle was very, very different. But everybody had their goal and focus. How did they achieve? And all are successful. Successful doesn't mean कि आपको सब लोग जानते हैं, लेकिन अगर आपकी फैमिली में, आपके फ्रेंड्स में आपको जानते हैं तो वो भी तो एक अचीवमेंट ही है ना, एक सक्सेसफुल होने का एक इशारा ही है कि यू आर अ सक्सेसफुल पर्सन एंड यू आर सराउंडेड विद पीपल, and people can listen to you, you can talk to them, you can share your thoughts with them. That is another kind of successful, being a successful person.
And for that, I think what I believe that you have to respect yourself. If you respect yourself, respect doesn't mean that I'm the best, be a selfish person, or you say that whatever I've said, you have to accept it. No, respecting yourself means accepting everything and everybody in your life. If you respect yourself, then you can give respect. There is a saying, what you give to others will come back to you in any form. It will be, it will be, but it takes time and patience. And why we want to have that focus? I mean, हर रोज सुबह मैं उठ के अपने आप को पूछती हूँ, what do you want today? Where you want to go today? And there are only two options, whether you want to be happy or you don't want to be happy. So definitely you will choose, I want to be happy. And how will you be happy? That is the question. And you can be happy only when you work on yourself. आज आपने सोचा कि आज मेरे को खुश रहना है, लेकिन ऐसा होता नहीं है. एक छोटी सी कॉल आ जाती है, ऑफिस से कॉल आ जाती है, घर से कॉल आ जाती है, बच्चों की कॉल आ जाती है, तो हमारा सारा फोकस हो जो हैप्पीनेस वो 1 मिनट में वॉश आउट हो जाता है. और वो वाला जो वॉश आउट होता है ना, दैट इज वेरी टफ. उस टाइम पे वी नीड to be focused on, I want to be happy today. Right. And happiness is not the pleasure. If you hit somebody and you're getting pleasure out of it, or you're fighting with somebody of no reason and you feel that, oh, I've won the fight, that is not happiness, because your surrounding is not happy. Your happiness depends not on others. It depends on you. And it's a very common saying. सभी बोलते हैं ना कि अपने आप को खुश रखो, आप अपने आसपास का माहौल अच्छा सा रखो, एटमॉस्फेयर अच्छा होना चाहिए. But who's going to do that? Nobody but you. और खुश रहने के लिए बहुत कुछ नहीं करना पड़ता. किसी को जज कर देते हम 1 मिनट में, उसके लुक से, उसके कपड़ों से, उसके चलने के स्टाइल से, उसके वर्ड से. उससे मुझे ये वर्ड बोला ही क्यों? ये नहीं चाहिए मुझे ये वर्ड मेरी डिक्शनरी में, पर उसकी तो डिक्शनरी में है ना, तो उसको आप क्या कह सकते हो? आप किसी को ठीक नहीं कर सकते. आप कह सकते हैं I disagree with you, but that does not mean that your disagreement is agreement for another person. They are not agreeing with you. So it's vice versa. मुझे अगर रेड कलर पसंद है और आपको ब्लू पसंद है, तो we both are right now. We have our own experiences, we have own likings, we have, rather I should say, we are born with that kind of nature. अगर मैं अपने आप को ये कहती हूँ कि I'm a happy person, तो मैं जब पैदा हुई थी तो शायद I was happiest, और मे बी जैसा भी था, जैसे भी हम पैदा हुए, हम उस नेचर के साथ ही तो पैदा हुए हैं. And people say that we are we are part of nature. When we are part of nature, then we have to accept nature of others as well. अगर हम लोगों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और अपनी सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, whatever, कल को मेरे पास बहुत सारा पैसा है और आज मेरे पास पैसा नहीं है, it's a very difficult situation, very, very difficult situations, because you have become lethargic, you get used to a lot of things. But how to adjust in that scenario, that is your focus of being happy. And generally I ask people, what do you want from your life? तो हर आदमी को पीस चाहिए, हर एक को खुशी चाहिए, हर एक को एक कंटेनमेंट चाहिए. So how can you achieve that? I think should be your goal.
And if that goal is with you, you can fit in yourself anywhere. Anybody can sit with you and you can, I'm sorry, I have got a cat and dog in my house. So, sorry. So, if you are comfortable in your own zone, then there is no issue. And it's not as simple as I'm saying. You have to do a lot of hard work for that. Every day, every moment, you have to remind yourself that, come on, Raji, you have to be happy. That was your promise to yourself. Every time, every moment, every. और ये नहीं हो सकता है कि आप अगर खुश हैं तो दूसरा भी खुश है. हो सकता है उस टाइम पे उसकी लाइफ में कुछ चल रहा हो. That we have to understand. And if we understand human nature, or our kids, or family, parents, friends, or in your office, wherever you go, if you understand that if I am happy, that does not mean they are happy as well. They must be, or they may be dealing with something. And it's not true that I'm happy. I must be, even right now, if I'm talking to you, I may be dealing with something. I was dealing with my dog and cat fight. So these are very small things, very, very small things. And generally, in that big scenario of our focus, we lose happiness and small focuses, which is ahead of me, minute to minute, we lose that. Right. So if you want to go for that focus and you want to be successful, because the successful and being a successful person and your focus, or focus to success, they are glued to each other. You cannot be successful till you are focused. Right. And focus is not a very big, hard and heavy word. Like being positive, मेरे लिए positive होना is very tough. मुझे लगता है कि मतलब मुझे positive होना, मुझे किसके लिए positive होना है? ये भी बात आ जाती है कि पॉजिटिव तो है, लाइक ये भी तो नहीं हो सकता है कि वी कैन इग्नोर अ लॉट ऑफ थिंग्स. मैं पॉजिटिव हूँ, मे बी सोनल नहीं है, और सोनल पॉजिटिव है, हो सकता है मैं नहीं हूँ, हो सकता है ना. तो इट्स अ वेरी ट्विस्ट ऑफ वर्ड्स, twist of situations. And I think if you can twist your words to your day-to-day life, you become the one. जरूरी नहीं है कि I was a very plumpy child, फिर I became thin, शादी वादी करनी होती है तो हम सब पतले पतले हो जाते हैं, और फिर जब इतने बड़े बड़े बच्चे हो जाते हैं then we start wearing ourselves. और ये वाली जो बात है ये जनरली सबके साथ होती है. लेकिन हमारी फिजिकल हेल्थ, फिर वही बात आ जाती है कि हमारी मेंटल हेल्थ, वो जो मेंटल हेल्थ है, अगर वो हमारी कंट्रोल्ड है तो हमारी फिजिकल हेल्थ भी हो सकती है. मैं हर रोज सोचती हूँ आज मैं पक्का जिम जाऊंगी, मैं ट्रेन को डेफिनेटली देखना. I promise you. And you know, if any of you are Punjabi, there's a saying, वो दिन डूबा जदों कोड़ी चढ़िया कुब्बा. I don't know if you have understood this or not. It means that day will never come in your life when, you know, they like, sorry, I cannot explain that in, I know that I'm not getting the right word for that. I'm sorry for that, but it means that day will never come. It's something like a hunchman cannot climb the horse. Yeah, I haven't heard this in a long time. It's great to hear. I use it all the time. Yeah, exactly. This is what I meant. लेकिन आकर फिर वापस फोकस अपने आप के ऊपर लाना is very important. You cannot be selfish. अच्छा चलो हम मान लेते हैं कि मैं तो बहुत खुश हूँ,
और मेरे ऑफिस में कोई आया या मैं किसी के ऑफिस में गई हूँ, वो किसी और सिचुएशन में रह रहे हैं, तो वो जब दूसरी सिचुएशन में रह रहे हैं तो मुझे तो नहीं पता, वो तो बहुत बबली बबली जाके हाय हाय सोनल, एंड सोनल इज लाइक हाय, you know, with expressions, expressions, you know, then you are like, oh, ye kya ho gaya? It happens. And at that time, that is the only thing you can make others happy. You spread your happiness. You try to change other people's, you know, situation. You can talk to them. And when Sonal say, oh yeah, Raji, yes, then I made Sonal happy. And this is what we should do. If you are happy, try to understand what is going on in others' life. And if you can help them, why not? You're capable of doing. And I don't think you have to a very good orator or a motivational Mohoda speaker or guru. We all are gurus. आप अपने बच्चों को, फैमिली को नहीं बताते, उनको गाइड नहीं करते हैं, आप करते हैं। चाहे बड़े भी होते हैं, अपने पेरेंट्स से तो बड़े होते हैं हमसे, बट वी टेल देम, ओ यू डोंट नो, आप ऐसे कर लो ना। लाइक माय किड्स, दे टीच मी अ लॉट ऑफ थिंग्स। वैसे जूम कनेक्ट नहीं हो पा रहा था फोन पे, तो मुझे पता था, आई मीन ना क्लिक कर लिया। तो जब वो मेरे लैपटॉप पे आया तो आई वाज कॉलिंग माय डॉटर, दीक्षा प्लीज, नलिन प्लीज, यू नो, एंड व्हाट्स द हार्म? This is technology, and everybody is not perfect. I think I've learned two things in my life. One, at a very young age, I came to know, I realized no one is perfect. That doesn't mean they are inferior or superior. I'm the best. We all have our own worlds. We all are rulers. We all are leaders. There is no comparison. I'm the best because there is no one like me. So I'm the leader in my own world. So everybody, so you are Sonal. You are the leader. You are the ruler. You can be anything you want to be because you have your own world. And that's it. It's a very small world. अब ये सोचो कि पूरे वर्ल्ड में अभी रिसेंटली चल रहा है कि इंडियन पॉपुलेशन इज गोइंग टू बी द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, एंड वी आर गोइंग टू बीट चाइना, राइट? बट इफ यू थिंक ऑन अनदर लेवल, ये तो इंडिया चाइना की बात हो रही है, थिंक अबाउट द होल वर्ल्ड, कितनी पॉपुलेशन है? एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग विच आई टेल एवरीवन, why you to be on the top in this whole world, in the population of so many people. जब हम top 10 लेके आते हैं, just 10, छोटा है वो नहीं है बहुत, just 10 out of billion trillion population, सिर्फ हम 10 लोगों को क्यों चूज करते हैं? कोई जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि हमें उसमें जाना ही नहीं है कि टॉप 1 कौन है, टॉप 2 कौन है। आई एम ऑन टॉप 1, दैट्स इट। जो लोग टॉप पे हैं वो क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करते हैं? वो बहुत अच्छे स्पीकर्स हो सकते हैं, वो उनके पास ढेर सारा पैसा भी हो सकता है, नॉलेज भी हो सकती है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उन्होंने अपनी लाइफ में अपनी सोसाइटी के लिए किया होगा, रिकग्निशन मिल जाती है। बहुत लोगों को रिकग्निशन नहीं मिलती, इसका मतलब वो तो नहीं है कि वो सक्सेसफुल नहीं है। एक छोटा सा आप ये सोच लो कि एक रिक्शा वाला है, क्या वो सक्सेसफुल अपनी लाइफ में नहीं है? क्या वो अपनी लाइफ एंजॉय नहीं कर रहा? वो स्ट्रगल कर रहा है जस्ट फॉर मनी, डे टू डे अर्निंग के लिए वो जरूर स्ट्रगल कर रहा है, पर वो स्ट्रगल का मतलब अनहैप्पीनेस नहीं है। एक किसी इंसान की नेचर होती है कि ये मेरी नेचर है, वी आर बोर्न विद दैट काइंड ऑफ नेचर विच आई टॉक अर्लियर। तो उसका मतलब ये नहीं होता कि पीपल आर नॉट सक्सेसफुल, पीपल आर नॉट एजुकेटेड। आप ये खुद सोचो कि एक जब ये छोटे से हम मकान बनाते हैं,
कुछ रिपेयर का काम कर रहे होते हैं, दे आर इंजीनियर्स। वो इंजीनियर्स ही तो, आगे इलेक्ट्रिशियन कौन है? इंजीनियर ही तो है। आप और मैं नहीं कर सकते, हम बहुत पढ़े लिखे हैं। लेकिन एक वो ग्रीन और रेड वो जो वायर होती है उसमें डिफरेंस नहीं पता चलता। Nobody is perfect, no one is perfect, तो इट्स ओके ना। मैं परफेक्ट नहीं हूँ लेकिन कहीं पे मैं परफेक्ट हूँ। मैं आप लोगों को इतनी देर से बोर कर रही हूँ तो ये भी एक परफेक्ट है ना कि आप अभी लॉग आउट करके भागेंगे नहीं। एंड यू आर अ वेरी गुड लिसनर, आई मस्ट से। और एक सुनना भी एक आर्ट है, isn't it सोनल? Absolutely, ma'am. सुनना हर एक के बस का नहीं है, हर आदमी अपने आप को शेयर करना चाहता है, तो सुनने के लिए पेशेंस चाहिए होती है। उसी तरीके से फोकस होके किसी को सुनना, ये भी तो एक फोकस ही है, एंड यू आर सक्सेसफुल इन दैट। तो आई सम अप, अगर आप थोड़ा सा पेशेंस रख लेते हो और बहुत बड़ी अचीवमेंट तो आपकी जिंदगी में आएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा। लेकिन जब आप वो अचीवमेंट आपको मिल जाएगी, देन व्हाट? अब क्या करोगे? उसके लिए फिर एक नया फोकस, फिर उसके बाद में एक नया फोकस, तो ये फोकस रहेगा ही रहेगा। तो डे टू डे लाइफ में हमारा जो एक कंसंट्रेशन है वो अगर मेरे लिए ही है, इट्स गुड। अगर मैं अपने आप को अच्छा बना लेती हूँ, अपने आप को खुश रख सकती हूँ, लोगों को खुशी बांट सकती हूँ, तो मेरे जैसा अमीर कोई नहीं है। Nobody is as wealthy as I am. लोगों के पास पैसा होता है और आप अपने मन में क्या कह रहे होते हैं? Look at their clothes. इतना पैसा है, कपड़े कैसे पहने हुए? ये एक जनरल हमारी टॉक होती है, यू नो। लेकिन अगर किसी के पास पैसे नहीं है और वो आपके पास आके खूब हंस के आपको हंसा के, तो आप नहीं सोचते कि उसे कपड़े कैसे पहने थे, उसके सैंडल्स कैसे थे, उसके बाल कैसे थे, वो कैसी लुक थी उसकी। You don't look on those points. And I think if you want to be successful, then focus on yourself. Start focusing on yourself. And that's it. आप अपने पे जब कंसंट्रेट करने लग जाएंगे, अपने आप पे फोकस करने लग जाएंगे, तो बाकी के सारे फोकसेस क्लियर हो जाएंगे। रोड्स विल बी क्लीन, क्लियर फॉर यू, एंड दैट्स इट। एक मुझे याद आ गया, मिर्जा गालिब का एक शेर है, बोलो। इरशाद इरशाद। ओके, बीच में थोड़ा सा मैं गड़बड़ भी कर सकती हूँ, राइट। ये कुछ ऐसे था कि कुछ इस तरह मैंने जिंदगी को आसान कर लिया। किसी से माफी मांग ली, किसी को माफ कर दिया, एंड दैट्स इट। मेरा इतना छोटा सा ही फंडा है। इतनी छोटी से मेरा एक्सपीरियंस है, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं आता। आई एम सॉरी। Very nice, beautiful, just apt. थैंक यू सो मच। Thank you so मैं much. एक एडवाइस, Thank you, Minakshi. Thank you. Thank you, ma'am. It was really a good speech by you. Very good thank advice, very good experience, very थैंक यू, experienced people. Very good. थैंक यू वेरी मच, Thank you very much. थैंक यू सो मच। If anybody can ask question, anybody wants to ask, you can. Even Thank from my you, ma'am. personal, no, if from my personal life you want to know anything, I'm okay. When So- you said that, I'm not a motivational speaker and I'm just gonna share my experience, I had that feeling that this is gonna be interesting one. And trust me, like online only, if we search, ma'am, we get so many motivational speakers. There are days when we really want to talk. So today's session, I will say, was really interactive. And because you were sharing your personal experience, we were feeling, okay, we are sitting next to each other and we are talking and we are communicating. yes. A very and how simply you said that in our own ways, we all are heroes.
I You believe gave the so. example of rickshaw wala and all. So I was like, कि, when you said na, I'm not a motivation, I was like, Sonal, ये session जो है ना वो interesting होने वाला है, कुछ हटके होने वाला है. And actually, it was like that. I mean, such small things, and at times, we hear heavy words, heavy statements, and all that. मुझे सबसे मजा तब आया जब when you started that Punjabi statement and you said कि मुझसे नहीं हो रहा translate. So I was like, yes, we are feeling as if we are talking to each other and we are sitting next to each other. But at the end, like you said, you motivated us in your own way, in your own way of speaking and experiencing. And वो मैम simple words ना ज्यादा जल्दी यहाँ जाते हैं. Yes. And it was like that. And ऐसा लगा ही नहीं वो कब सेशन शुरू हुआ, कब we went with the flow. It was very much like हम सब ऐसे बैठे हैं and we are talking and you are sharing your things. It was so beautiful. Your journey was beautiful. It was very inspiring. And like you said that we all are motivational speakers. We all have some or the other thing to share and to motivate others. एक तो ये कि हाँ अभी सक्सेसफुल दोनों हो गए. आपका स्पीकिंग भी हमारा लिसनिंग भी. So we reached first level today. Thank you so much. Beautiful section. She was very spontaneous. Thank you Ma'am, so you much. were very Thank you all. spontaneous. Very good. Excuse me. I just want to say something. Can you hear me? Who is speaking? I'm Dr. Vasudha. Oh, hi, Vasudha. Yes. Hi Yes. all. I joined this session for the first time with the reference of Minakshi Aunty. I know her since last 1 year. I just switch on her link. I just want to listen कि what she wants to say. I feel like कि चलो सुनते हैं क्या होता है ये. तो I was bit sleepy. तो मैं सुनते सुनते मेरी नींद ही खुल गई. So actually, I just want to say something about her. I know her since last 1.5 year, I guess. So we meet on very frequently for her, for a few things. So whatever she said, na, she actually do in her daily life. मतलब कि after meeting her, you never feel that she is negative about anything. मतलब कि it was not just what she said was just a theory कि हाँ ऐसा होता है, because generally जब लोग बोलते हैं तो वो थ्योरी होती है कि ऐसा करते हैं ऐसा करते हैं, but what she said, she meant each and every word. I've seen her practicing in her daily life. So I think that is what she is doing daily basis, where I see her smiling for all the problems. She don't find it a problem, she find it a solution. कि प्रॉब्लम नहीं है, हमें इसको सॉल्व करना है, बस प्रॉब्लम को पास नहीं रखना. जस्ट ऑल एंड शी ऑलवेज कीप टेलिंग मी आल्सो कि यू गॉट द प्रॉब्लम, फेस इट एंड सॉल्व इट. उसको रखो नहीं, स्माइल करो और आगे बढ़ो. सो रियली इट वाज अ गुड सेशन. I think I'll join the further session for further learning. It was great to be here with you all. Thank you so much. Thank you so much. That's Thank such you. a sweet Thank word. you, Vasudha. Now, so nice speaking, Dr. Minakshi. I would like Samina ji to ask few questions. She has some question in her mind. Please, Samina ji, please ask questions. Sure. Good morning, Minakshi ji and everyone here. And listening to you, our heart has opened up to the real test of compassion that you have taught us today morning. That if somebody is sad, how do you find out and how do you help them to come out of that sadness? So going with that flow, I would ask you, what are the 3 biggest challenges that you faced in your life? Please tell us. The challenge is a very heavy word, I should say, ma'am. हमारी लाइफ में बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस भी होते हैं और छोटे छोटे भी होते हैं. अभी सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठना इज अ बिग चैलेंज फॉर मी. यही बहुत बड़ा चैलेंज होता है. Yes, I had challenges in my life. Especially, biggest challenge was when I lost my husband. My kids were big enough to understand the things, but they were not old enough to take that sudden shock.
So coming out of that well, first myself, then I had to pull my kids also. Both the children were at that time, my daughter was, she just passed her BDS, and my son was in university. So at that time, I thought, what should I do? And what my mother told me once, you won't believe me, ma'am, there was a point in my life when I thought of committing suicide. And I'm not telling, like, I never told anybody because it's a very small thing. जैसे छोटी एज होती है हमारी, हम बहुत जल्दी shuffle हो जाते हैं, हमें लगता है कि वो life is hitting us like anything. Then my mother, मैंने अपनी mother को बोला कि अगर मुझे कुछ हो गया तो आप मेरी daughter को संभाल लोगे ना, you know. When I told her that, then she, being a mother, you know, you already know your kids. And she told me, okay, you must be dealing with something, that's fine. But I tell you one thing, everybody have their own situations. आपको एक बहुत छोटी सी स्टोरी उनसे आप लोगों ने सुनी भी होगी कि एक साधु था, वो हर रोज प्रीच करता था अपने टीचर्स को, और उसके पास एक पिंजरे में तोता था. कैन आई स्पीक इन हिंदी? Yes, yes. Yeah, sure. ओके. तो वो जब साधु जी महाराज जी अपना बोल बाल के हो जाते थे, फ्री हो जाते थे, और वो बड़े आराम से उसके तोता को निकालते थे पिंजरे में से, उसको खाना देते थे. तो उन्होंने एक दिन स्पीच में अपनी बोला कि हमें ना हमेशा एक प्रॉब्लम आती है, मतलब वो इतनी हिंदी भी नहीं आती मुझे. तो वो जो हमारे को सिचुएशन आती है तो उसमें हमें एक युक्ति निकालनी होती है, एक सॉल्यूशन निकालना होता है उस सिचुएशन से निकलने का. तो जब वो नेक्स्ट डे उन्होंने पिंजरा खोला और देखा कि वो बेचारा तोता मरा हुआ, उन्होंने उसका पिंजरा खोल दिया और वो तोता फिर से उड़ गया. तो वो हैरान हो गए. उन्होंने बोला, मिस्टर तोता, ये कहाँ उड़ गए, आप तो मरे हुए थे अभी. तो तोता ने बोला कि आपने खुद ही तो कल बोला था कि सिचुएशन आई है, तो उसके बारे में सोचने की जगह पे आप उस सॉल्यूशन को ढूंढो, सोचो. तो मैंने निकाल लिया सोल्यूशन. सॉल्यूशन ढूंढ लिया अपने यहाँ से निकलने का. तो वो वाली बात मुझे उस टाइम पे याद आई. मेरे फादर हमेशा कहा करते थे, आंवले का खाया और बड़े का सुनाया बाद में पता चलता है, व्हेन यू ग्रो अप. और वो वाली सिचुएशन, मतलब वो आप समझ लो कि मेरी मदर डाइड व्हेन आई वाज 30, तो आई मस्ट बी अराउंड 29 28, एंड व्हेन माय हस्बैंड डाइड आई वाज 49. और उस टाइम पे मुझे इतने सालों बाद उनकी बात याद आई कि नाउ आई एम कॉट, मेरे पास सॉल्यूशन चाहिए मुझे, मैं उस सिचुएशन में नहीं रह सकती थी. दैट वाज द बिगेस्ट चैलेंज इन माय लाइफ. सेकंड जो मेरे बहुत बड़ा चैलेंज था, जब व्हेन आई लॉस्ट माय मदर एंड माय ब्रदर, वो सिचुएशन भी बहुत अजीब सी थी कि आप 40 डेज में आपके जो लव वंस हैं दे लेफ्ट यू. तो वो सिचुएशन बहुत बुरी थी उस टाइम पे, क्योंकि माय सन वाज जस्ट हार्डली अ ईयर ओल्ड, माय डॉटर वाज 3 years old or 4 years old. तो ये जो थे लोगों का बिछड़ना, आई शुड से, वो जो वैक्यूम होता है ना, उसे कई बार अभी भी मुझे लगता है कि बुरा है. लेकिन फिर बाद में मैं सोचती हूँ कि कोई बात नहीं, मुझे यहाँ कौन सा हमेशा रहना, जाके मिलूंगी तो पूछूंगी क्यों छोड़ के गए थे. तो ये जो दो थे. और थर्ड चैलेंज तो टचवुड अभी तक आया नहीं है, तो सॉरी. अभी तक दो ही है. पर बड़ों ने कहा हुआ है और हमने सुना हुआ है, और हम जो सुन रहे हैं, जो प्रीच, मैं भी आपको अगर कोई बात कर रही हूँ तो अगर हम उसको प्रैक्टिस में ला रहे हैं तो आई थिंक आई एम सक्सेसफुल. अगर आप मेरी किसी बात से आपको कुछ बेनिफिट मिल रहा है, आप उसको यूज करोगे अपनी लाइफ में, तो मेरा ख्याल है आप लोग ही मुझे सक्सेसफुल बना दोगे. और मेरा फोकस जो आज का है, अचीव दैट. So, coming to that, could I say that your biggest lesson to us today is that just find your solution in whichever situation you are, right? Right.
And focus is not anywhere, you know. किसी का फोकस पैसे पे है, फैमिली पे है, हम भूल जाते हैं फोकस मुझे मेरे ऊपर ही करना है. फोकस बाहर नहीं है, फोकस मेरे ऊपर ही है. फिर तो कोई भी सिचुएशन आ जाए, यू कैन डील विद दैट. और फिर जब ये आप यहाँ पे क्लैरिटी आ जाती है, और ये क्लैरिटी एक दिन में नहीं आएगी. यू हैव टू प्रैक्टिस, यू हैव टू टेल योरसेल्फ. और हर रोज सुबह उठ के मेरी डेली प्रैक्टिस ये होती है, राजी व्हाट डू यू वांट टू डू टुडे, हाउ यू वांट टू बी टुडे, और आंसर ऑटोमेटिकली आता है हैप्पी. मैं ऑफ कोर्स रोना नहीं चाहूंगी. That's very nice. Yeah, that's perfect. Means you have given us two lessons. If I may sum it up, you can correct me if I'm wrong. One is don't deviate from your focus. Even if small and big hurdles come back to it. Right? Right. And the second is find happiness in whatever situation you are. Yes, your face should broad. Have your broad smile on your face. That's it. That shows that you're dealing a lot of things at a time, and you can deal anything. That's it. And that's all from me. Yeah, that's wonderful. We have on this wonderful Friday morning where our entire weekend is going to go very nice because of your perspective that you have given us. And I hope any of the other audience would like to ask any question. You're most welcome. If you want to ask some question, I can see the hand raised. Yeah. Pritam ji. Tell me. Yes. Pritam ji? Yes, yes. Yeah. So what I learned from Minakshi today is that you have to focus on the challenges. Challenges should not be looked as challenges, but you have to find solution. You should focus more on solution rather than the challenges. And so if you waste your time only on your problems, you will be lost, you will be depressed. But if you keep focusing on the solution, you will find the solution. Solution for every problem is there. Yes. When there is a problem, there is a solution as well. Yeah. Never forget that. If morning is there, night will be there. Yeah, Definitely. yes. And when दिन night के is बाद there, रात आनी आनी. yes, बिल्कुल. रात के बाद दिन आना है. Yes. उस टाइम हम क्या होता है, प्रॉब्लम के साथ इतने एनग्रास्ड हो जाते हैं कि हमें बहुत बड़ी वो लगती है कि अब मैं क्या करूं. As see, you said you had thought of committing suicide. That's really, it means the challenge, the problem was very big, and you have faced those problems very bravely. I would say that it's very difficult to bring up children single-handedly, and you have done it nicely. And I really inspired by your facing those challenges bravely. Thank you, thank you, thank you. Thank you very much. Anyone else want to ask anything or share anything about this thing? Very inspiring indeed. I mean, I also lost my husband about 4.5 years ago, and I'm still trying to find, you know, at times I do feel sad, but I've also found solutions. But it's a loss. A loss is a loss. And I was just wanting to ask you as to how did you get out of it with such a huge loss that you went through at that time? What did you do? I can't see who's. Oh, this is Uma. Sorry? Uma. Uma. Okay. Uma, H-U-M-A. No, UMA. UMA. Okay. Uma. Yes, yeah, you're there. Uma, you've been through the same situation. बहुत टफ होता है, बहुत ही ज्यादा टफ होता है. लेकिन मेरे साथ मुझे लगा कि जो चला गया उसको नहीं आना है, उसको वापस नहीं आना है, और मुझे उसको मिलना नहीं है. जब मिलेंगे तब मिलेंगे, देखी जाएगी. पर अभी मैं रोऊंगी तो भी कुछ नहीं होगा, बीपी हाई भी कर लूंगी
तो भी नहीं कुछ होने वाला। और फिर उसके साथ में जब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, जब आपके पास ना कोई सिचुएशन ऐसी आ जाती है जहाँ पे ऑल्टरनेटिव नहीं ना होता, यू हैव टू एक्ट ब्रेव। ऑप्शन ही नहीं है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होती उस टाइम पे। तो वो वाली ऑप्शन को जो फिर मिल गई होती है, तो देन यू स्टार्ट एक्टिंग ब्रेव। वो ऑटोमेटिकली बाय ग्रेस ऑफ गॉड, आई शुड से, बाय ग्रेस ऑफ एल्डर्स, और जो आपके आसपास के लोग होते हैं, स्टार्ट बिलीविंग इन देमसेल्फ, स्टार्ट बिलीविंग इन योरसेल्फ। आप ये सोचो कि मैं आज अकेले हूँ, सो व्हाट। जब मैं आई थी तभी मैं अकेली ही थी। पेरेंट्स ने ही बोला था कि हम तुम्हारे पेरेंट्स हैं, मुझे क्या पता, मुझे नहीं मालूम था। हाँ, हस्बैंड का मुझे पता था कि हस्बैंड मैंने चूज किया है, ये बच्चे मेरे हैं क्योंकि मैंने पैदा किए, तो मुझे पता है। लेकिन अगर वो नहीं है, वो सिचुएशन नहीं होगी, क्योंकि लाइफ ने हमें हिट करना ही करना है, हमेशा करना है। और फिर अगर हम उसी पे वी स्टार्ट ब्रूडिंग, उसका कोई फायदा नहीं होना। इससे अच्छा ये नहीं है कि इतनी ब्यूटीफुल लाइफ दी है हमें। मेरे ख्याल है हिंदू माइथोलॉजी में तो ये भी बोला जाता है कि 84 लाख योनियों के बाद आप इंसान बनते हैं। तो वाई टू वेस्ट? फिर कौन 84 लाख योनियां कौन जाए उसमें? अभी जी लो। That's a good one. अभी लाइफ मिली है, इतनी सुंदर आपके साथ, आसपास इतना अच्छा मौसम है, होली आ रही है, खेलो, मजे करो, लोगों को मजे कराओ, पार्टी करो। दोबारा पार्टी कब पैदा होंगे क्या पता। So true. सही। We should live our life. Of course, I hope उमा, मैं आपके साथ इंटरेक्ट थोड़ा। Yeah, absolutely, absolutely. I guess that's the only way to handle a situation like that. सी सिचुएशंस तो आती रहती है ना, वो आती रहेंगी, जब तक हम हैं सिचुएशन आती रहेगी, उसका हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हर सिचुएशन में हम अपने आप को कहाँ कहाँ एडजस्ट करें ना, जैसे हैं हम ठीक है, आ जाए सिचुएशन, क्या करें। Are you happy, Uma? Yes, I'm very happy looking at you and smiling and sitting and giving us such lovely gyan. And God, making gyan is others a very happy heavy as well. No, this is a very inspiring gyan. नहीं उमा, आप कल से यही प्रैक्टिस करना जो मैं करती हूँ। सुबह अपने आप को पूछना, मुझे आज का दिन में कैसे रहना है, खुश रहना है या टेंस रहना है, पता चल जाएगा आपको खुद ही। आपको कोई ज्ञान की जरूरत नहीं है, आप खुद ही ज्ञानी हो। हर इंसान अपने वर्ल्ड में लीडर है, और आप ही लीड कर रहे हो अपनी लाइफ को ना, कोई और थोड़ी कर रहा है। तो यू आर द लीडर, वेरी सिंपल। Absolutely. Yes, Minakshi ji, you said very simple मेरी words. लाइफ You में are the leader. Yes, you are guru. You are mentor of your own. Whatever you do, Yes. every lock has its own key. No problem without solution. There's no. Yes. I got this point. Thank नीलन you. जी, एक तो आप Yeah. बहुत अच्छे से स्माइल कर रहे हो, मुझे मजा आया आपको देख के। Thank you and same with you. और आप जब भी किसी को देखो, आप जब भी किसी को देखो ना कि वो स्माइल नहीं कर रहा, गिव अ रीजन टू देम। I just You'll do be and happiest. everybody gets smile. She's blushing also. But she's smiling so beautifully. Yeah. I must say, look at her. God grace. I got and heard it from my father. Oh God. तो पूरी फैमिली ट्रेंड है ये हैप्पीनेस वाला। Meena ji, you can see also she's always smiling. Thank you. It's really an honor to be with you all. मैं personally नहीं मिल पा रही हूँ, वरना we would have more fun and more interaction. And Yeah, I don't we should meet personally. Yes, yes. Yeah, ma'am. I think next all of you should come to Malaysia. Have an event in Malaysia. I can organize for you all.
I got my contacts. We have people here in Malaysia. We have good speakers. We can also organize one, or even on online also. I can still make arrangement. Yes, Yes. Shubhra. Yeah. Thank you. Meenakshi ji and Neelam ji, smile is infectious. Very Yes, yes. By your looking at it, I also started smiling. Positive, And even yeah. Nupur ji also, she also keeps smiling. That's very good. Thank you. Nupur ji has also Thank you very so nice smile. Thank Nupur you. ji Thank you also so ऐसे- much. ऐसे मैम की तो आवाज सुनकर कैसे खुशी हो जाती है, मैम हेलो ही बोल देती है ना, तभी वहीं से ऐसे अच्छा फीलिंग शुरू हो जाता है। मैम ऐसे बोलती है गुड मॉर्निंग सोनल, गुड मॉर्निंग एवरीवन, बस वहां से खुशी की शुरुआत वहां से हो जाती है। Even Sonal ji, you are also very smiling. Sorry, I forgot to give, say your name. Thank you. Thank you. थैंक यू सर। कुछ ऐसे फेसेस होते हैं जो Thank you. हमारे मेमोरी में एनग्रेव हो जाते हैं, और मेरा ख्याल है हम सबके फेसेस ऐसे हैं कि लाइक माइंडेड, एज यू रोट ऑन योर फ्लायर, आई थिंक so like-minded people are there, all smiling and beautiful faces, and you all made my day. Thank you. I will say the same thing for the session as well, ma'am. That, like you said, we all will be remembering the faces. I'm sure everyone today who attended the session and who will be watching it online, they'll be remembering the session as well. It was so lively, chirpy, and very positive. You said, "Na, मेरे को positive रहना difficult है." You are very positive person, and that vibration reaches to everyone. Thank you so much. It was a wonderful and beautiful session, and very positive and happy one. So thank you so much. And I want to thank everyone who has attended the session, क्योंकि मैम ने बोला a good listener is also very important to be a good listener. So you all were a very good listener. Thank you so much. And we all will catch up for the next session. Anyone having any questions or want to discuss anything with ma'am can obviously join in the group and can write it down